Fine, children. We'll have a very nice topic today to discuss. That is cancer. The topic is nice, but it is too much deadly. Almost millions of death it has caused. We have to memorize this cancer in simply 8 points. I repeat, in 8 points only. Okay, let us go. Start by point wise. Number one. What is cancer? Firstly, this term cancer was given by a Greek, what do you call, a medicine scientist, Hippocrates. That cancer का मतलब होता है crab. So he called these cells as crabs or crab cell. So cancer is actually canker. That's meaning in English is crab. Okay. So what is this cancer or crab? It is the uncontrolled growth of cell. I repeat, it is the uncontrolled growth of cell that is called cancer. Now what is being causes और how it is being caused, ये होता कैसे है? तो simply जो अपना ग्रुप है PCB that causes cancer. P for physical agent, C for chemical agent, and B for biological agent that causes the cancer. This cancer agent means carcinogen. So physical carcinogens are these X-rays, UV rays or gamma rays. Chemical carcinogens, this is shortcut to remember, can be fat. C for cadmium, C for cadmium, A for asbestos, N for nickel, B for benzene, F for formaldehyde, A for acrylamide, T for tobacco. See, cadmium, asbestos, nickel, benzene, formaldehyde, acrylamide, tobacco, even alcohol also causes the cancer. So these are the carcinogens of chemical category. Next is B, that is biological carcinogens or cancerous agent. Here P on C, that means प्रोटोऑन्कोजीन्स, मतलब कुछ जीन्स हमारे सेल में होते हैं जो बहुत ही ससेप्टेबल होते हैं कैंसरस बनने के लिए. दैट विल सी इन द मैकेनिज्म. एंड VONC, दैट इज viral oncogene. It's true that there are certain viruses that can cause cancer in us. For example, HPV, that is human papilloma virus. HBV, that is hepatitis B virus. RSV, that is Rous sarcoma virus, and EBV, that is Epstein-Barr virus. So these are the most common viruses that causes the cancer. अब देखते हैं थर्ड पॉइंट कि नॉर्मल सेल NC और कैंसरस सेल में बहुत यूनिक डिफरेंस क्या होता है. बड़ा सिंपल है. नॉर्मल सेल्स जो होते हैं उनका एक लाइफ स्पैन होता है, दैट्स व्हाई दे आर मॉर्टल. और जब वे ग्रो होते हैं तो उनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, इतनी उनकी ग्रोथ है तो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट के साइड में रह के वो अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे. ग्रोथ रेगुलेटर्स फिर से उनका सेल डिवीजन होने नहीं देगा. बट कैंसरस सेल जो है वो इमॉर्टल होते हैं, उनका लाइफ स्पैन फिक्स नहीं होता और वो उनके अंदर नॉन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, मतलब वे कॉन्टैक्ट के साथ अपनी ग्रोथ को स्टॉप नहीं करेंगे एंड देन दे स्टार्ट growing continuously and they becomes cancerous, causes the tumor. So difference between normal cell are mortal, they are contact inhibitant, okay, and the cancerous cell are immortal and they are non contact inhibitant. Okay, next mechanism. अब होता कैसे है, गौर से देखना. these two cells, ये है normal cell और ये है cancerous cell. morphologically cancerous cell is not like the normal cell, but ये cancer होता कैसे है. when See, this is normal cell. When this normal cell, if we study, it has these two key components along the other components present inside the cell nucleus, everything, okay. TSG stands for tumor suppressor gene. ये normal cells में होता है, tumor suppressor gene. और cells के अंदर PONC भी होते हैं, that is proto-oncogenes, मतलब those genes which are susceptible to become cancerous. Okay, so proto-oncogenes present है जो अभी cancerous नहीं हुए, और tumor suppressor genes है जो cancer बनने नहीं देंगे. When this normal cell get exposed to carcinogen, that is cancerous agent, can be physical, chemical, biological. When this carcinogen comes or expose the normal cell to carcinogen,
it becomes transformed to cancerous cell because the tumor suppressor gene diminished, the proto-oncogene which was being supposed to be suppressed by tumor suppressor gene is not being under control of TSG, so it becomes now cellular oncogene, and in this way the normal cell becomes cancerous cell because of the oncogene. Oncogenes are being transferred from the proto-oncogene. So this is a simple mechanism by which a normal cell get converted into cancerous cell. Now next is when the cell becomes cancerous, it causes the tumor, that is uncontrolled growth of the cell and becomes continuous multiplication forms the tumor. तो ये ट्यूमर जो कैंसर की वजह से बना है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक बी, दूसरा यम. बी स्टैंड्स फॉर बेनाइन, जो एक जगह ही रुके हुए होते हैं, वहीं पे ट्यूमर बनते हैं और वो अपने बॉडी में माइग्रेट नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई द फर्स्ट टाइप इज benign tumor which is localized. B for benign, L for localized. Second one is malignant which migrate to other parts of the body. Hence the tumors are benign tumor, malignant tumor. Benign tumor are localized and malignant tumor do migrate to other parts of the body. That's why benign tumor are less dangerous and malignant tumor are more dangerous. Next is their types. अब कैंसर के टाइप्स कौन से हैं एज पर द लोकेशन ऑफ द बॉडी? बड़ा सिंपल है, इसके लिए शॉर्टकट याद रखना MSCLL. MSCLL. यम स्टैंड हियर फॉर मेलानोमा, द टाइप ऑफ कैंसर कॉज्ड इन द मेलानोसाइट. मेलानोसाइट क्या होते हैं? जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग या पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द बॉडी होते हैं. सार्कोमा, दिस इज द कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कार्सिनोमा, ये सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है. इट इज ऑकर इन द एपिथेलियल सेल और मोस्टली द स्किन सेल्स. देन लिम्फोमा, ये हमारे इम्यूनोलॉजिकल सेल्स यानी लिम्फोसाइट्स में होते हैं. बोन मैरो में होता है जहां से लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं. इवन थाइमस जहां पे टी सेल मैच्योर होते हैं. द लास्ट वन इज ल्यूकेमिया विच इज मोस्टली द कैंसर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, वेरी डेडली एंड डेंजरस. अब ये हो गया टाइप MSCLL, दैट इज मेलानोमा, सार्कोमा, कार्सिनोमा, लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया. अब इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? जब कैंसर हो जाएगा, एक नॉर्मल सेल कैंसरस बन जाएगा, देन हाउ वी आर गोइंग टू डिटेक्ट दैट? सिंपल एक शॉर्टकट याद रखिए, दैट इज हमारा एक्स भक्त. कई तरह के भक्त होते हैं, उस तरीके से आप ये भक्त याद कीजिए, हमारा एक्स भक्त, दैट इज यम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक्सरे स्टडी. BS स्टैंड्स फॉर बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी. इसमें क्या होता है, जस्ट जो कैंसरस रीजन है बॉडी में का, वहां पे एक इंजेक्शन से वहां के सेल्स या फ्लूइड निकालते हैं और अंडर माइक्रोस्कोप उसकी न्यूक्लियर रेशियो, साइटोप्लाज्मिक रेशियो चेक करते हैं, जो कि ज्यादा होता है कैंसरस सेल में नॉर्मल सेल से, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो. देन दिस MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक्सरे, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी. देन एंटीबॉडीज टेस्टिंग. जब एक सेल कैंसरस बनता है तो उसके ऊपर अलग अलग एंटीजेंस होते हैं. इस एंटीजन को हम एंटीबॉडीज से डिटेक्ट करते हैं. समझो एक सेल है ह्यूमन के अंदर और वो कैंसरस सेल है. सपोज P स्टैंड्स फॉर प्रोस्टेट कैंसर. तो प्रोस्टेट कैंसर के अगेंस्ट अगर से हम एंटीजन चेक करेंगे एंटीबॉडीज को बाइंड करके, तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द prostate cancer. So A stand here for antibodies to check whether the person is suffering from cancer. CT stands for, of course, CT scan, that is computed tomography. तो कितना सिंपल है डिटेक्शन, बस ये हमारा एक्स वर्क को याद रखना है. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक्सरे, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी, एंटीबॉडी टेस्टिंग एंड कंप्यूटेड टोमोग्राफी. ट्रीटमेंट के लिए एक सिंपल सा शॉर्टकट याद रखना, रिक्स. रेडिएशन सबने सुना है, जो भी कैंसरस पार्ट है उसको रेडिएशन को एक्सपोज कर देंगे, जिसकी वजह से वो सेल किल हो जाएंगे. बट इसका एक इम्पैक्ट है कि रेडिएशन की वजह से साइड के सेल्स भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं. सो इट इज नॉट 100% सेफ. नेक्स्ट है इम्यूनोथेरेपी. इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं, दरअसल इम्यूनोथेरेपी को दूसरे थेरेपी के साथ ऐड करते हैं, मतलब इम्यूनोलॉजिकली उस पर्सन की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देते हैं, या फिर इंटरफेरॉन्स देते हैं, या साइटोकाइंस देते हैं, या फिर टी सेल ट्रांसफर करते हैं. अगर बॉडी में टी सेल्स का परसेंटेज बढ़ गया, जैसे टी नेचुरल किलर सेल, तो वो वायरस को किल करने में या कैंसरस सेल को एनगल्फ करने में, किल करने में हेल्प करेगा. इन दिस वे इम्यूनोथेरेपी कैन बी डन
Chemotherapy, of course, it is most widely used method against the cancer treatment. Most commonly, the chemicals or drugs like busulfan, cyclophosphamide are being used. And of course, yes, for surgery, any part present inside the body which is cancerous can be surgically removed. और एक चीज याद रखना है कैंसर के अंदर that the most common cancer in female is breast cancer and uterine cancer. In case of female, breast cancer and uterine cancer is the most common, whereas in case of males, lung cancer and prostate cancer is most common. Okay, in female, breast cancer and uterine cancer; in male, lung cancer and prostate cancer. So in this way, simple, in 8 steps, we can memorize or understand the concept what is cancer and entire its history. This I suppose you understood. So thanks for watching this. Thank you very much.